Hello everyone, this is Vishakha Sehdev Verma. In this slide, we will learn about agglomerative hierarchical clustering with the help of example. Now let's assume that we have a set of one-dimensional data points. The points are 16, 20, 23, 40, 25 and 41. Now we have to merge the cluster using the minimum distance. Now the first step is what we will do here. I have made a table here. Now I have written all the data points like 16, 20, 23, 25, 40 and 41. I have written it here as well. Now what we will do, we have to calculate the minimum distance. So 16 से 16 का distance 0, 16 से 20 का distance 20 minus 16 4, 23 minus 16 7, 25 minus 16 9, 40 minus 16 24 and 41 minus 16 25. Now I have done it for all the data points. So 20 minus 16 again 4, 20 minus 20 is 0, 23 minus 20 you can say because we just have to write it down here the number. So it will be 3, 25 minus 25, 40 minus 20 20 and 41 minus 20 21. We have to do it for the complete table. Now in the first step what we have to do, we have to find the minimum distance. So if you will see in the table, the minimum distance is 1. Let's see here, 1 is the minimum distance. Don't consider 0 here because जो 0 है वो उसी नंबर का उससे ही डिस्टेंस है. जैसे 16 से 16 का डिस्टेंस 0, 20 से 20 का डिस्टेंस 0, so we don't need to consider it there. अब हम क्या देखेंगे, ये जो 1 है मिनिमम डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट किया है, ये कहाँ पे आ रहा है, 40 और 41. सो नाउ वी विल मर्ज दीज टू पॉइंट्स. 40 और 41 को हम मर्ज कर देंगे. मैंने इन दो रोज को हाईलाइट भी किया हुआ है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विच रोज एंड कॉलम्स वी आर मर्जिंग हियर. स्टूडेंट्स हैव वन क्वेश्चन एंड डाउट हियर कि जब हम 40 और 41 को कंबाइन करेंगे तो हम कौन सा डिस्टेंस लिखें इन दोनों को कंबाइन करके. सो व्हाट वी डज, वी जनरली टेक द मिनिमम डिस्टेंस. सो 40 और 41 को जब हम मर्ज करेंगे तो 24 और 25 में से मिनिमम इज 24. देन वी विल टेक 20, 17, 15, again here 24, 20, 17, 15 and 0. As you can see here, we have merged 40 and 41 and the minimum distance is written here. See this? Now what we have to do, again we have to find the minimum distance. So now you can see here the minimum is 2. I have highlighted the rows and the columns जहाँ पे 2 आ रहा है. तो अब ये 2 कहाँ पे आ रहा है, 23 and 25 में. So now we will combine 23 and 25. And the minimum distance which we will use will be 7, 3, again 0 and 15. Then we have combined 23 and 25. This will be used in making dendrogram. Now again we have to find the minimum distance which is 3 here. As you can see here 3 ही सबसे minimum है यहाँ पे. So now we will merge 20 with 23 and 25. हमने सबसे पहले 40 and 41 को merge किया. Then we merged 23 and 25 and after that we merged 23 and 25 with 20. So now can you see we have merged 20, 23 and 25. Again we have to find the minimum distance, so it is 4 here. So now we will merge 20, 23 and 25 with 16 and we will choose the minimum distance which is 0, 0 and 15. And now we will merge 16 with 20, 23 and 25. So यहाँ पे सबसे पहले merge किया था 40, 41 को. Then we merged 23 and 25. Then हमने इसको merge किया था 20 के साथ और अब हम इसको किसके साथ merge करें, we are merging it with 16. तो आपको ये sequence याद रखना है. It will be very beneficial in making the dendrogram जो हम last में बनाएंगे. See, we have written here 16, 20, 23 and 25. और अब हमने ये चूज कर लिया है. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, now we have to merge this and then we will have one cluster left. See, we have combined all the data points and now we have one cluster left. Now we will make the dendrogram.
सबसे पहले हमने यहाँ पे 40 और 41 को मर्ज किया, देन हमने 23 एंड 25 को मर्ज किया, उसके बाद हमने इसे किसके साथ मर्ज किया, वी मर्ज्ड इट विद 20, उसके बाद हमने इस पूरे सेट को मर्ज किया था 16 के साथ, और लास्ट में हमने इस पूरे को मर्ज किया था 16, 20, 23, 25, इन सबको मर्ज करने के बाद हमने इन सबको किसके साथ मर्ज कर दिया लास्ट में, 40 एंड 41. So now this structure is known as dendrogram. That's all for today. Thank you.